Hello bachcho, let us see the question. The question says a block of mass m1 equal to 1 kg, another mass m2 equal to 2 kg are placed together as presented in the figure on an inclined plane with an angle of inclination theta, and various values of theta are given in the list 1. The coefficient of friction between the block m1 and the plane is always 0, and the coefficient of static and dynamic friction between the block m2 and the plane are equal to mu equal to 0.3. In the list second, expressions for the friction on block m2 are given. Match the correct expression of the friction in list 2 with the angles given in the list 1, and then choose the correct option. The acceleration due to gravity is denoted by g. Then we have been given some useful information. Now let us see the key concept for the case. तो हमारे पास अगर एक बॉडी जो है वो inclined plane पे है, it is on an inclined plane, unless and until it starts moving, it is being acted upon by the static friction, and when it starts moving तब हमारे पास dynamic friction आ जाता है into the place. And अगर हमारे पास जो body है that is supposed to be at equilibrium, that is it is not moving downwards, तब हमारे पास net resultant force जो होगा body पे that will be 0 in the case. Now in the question हमारे पास दो masses दिए गए हैं on an inclined plane with an angle of theta. हमारे पास दो masses दिए गए हैं, this is the m1 mass and this is supposed to be the m2 mass. तो हमारे पास जो अगर हम इसका जो वेट कंपोनेंट लेंगे डाउनवर्ड्स दैट विल बी m1 प्लस ऑफ m2 टाइम्स ऑफ g. अगर इसको रिजॉल्व करेंगे देन वी हैव टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, दिस विल बी द थीटा एंड दिस विल बी m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ g इनटू cos ऑफ थीटा, एंड इसका जो दूसरा कंपोनेंट आएगा दैट विल बी m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ g into sine of theta. And because if it is sliding downwards तो हमारा जो frictional force होगा naturally वो upwards act कर रहा है. Now let us consider the first case जिसमें हम कह रहे हैं कि there is a no slip condition. So if we consider the no slip condition तो हमारे पास जो F maximum generate होना चाहिए that is equal to mu into m2 times of g into cos of theta. एंड हमारा जो m1 के लिए केस होता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में डिस्कस किया है, दैट इज m1 इज फॉर m1 द म्यू इज इक्वल टू 0. देयरफॉर हम सिर्फ m2 का जो है कंसिडरेशन ले रहे हैं. सो विच एम्प्लाइज हमारे पास जो होता है म्यू टाइम्स ऑफ n विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ m2 इंटू g टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा, बिकॉज हमारा जो f max होता है दैट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ n, where n is the हमारा जो normal component होगा upwards की तरफ. So which implies mu and mu on both the sides gets cancelled. तो हमारे पास n जो आता है that is m2 times of g into cos of theta. So now अगर हम second condition देखें जहाँ पे we consider that there is a net sliding is happening in the case, then we have F max जो इस कंडीशन के लिए आना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू m1 प्लस ऑफ m2 टाइम्स ऑफ g इंटू साइन ऑफ थीटा. सो विच इम्प्लाइज हमारे पास F max वी ऑलरेडी नो दैट F max is equal to mu times of n. Then we have mu times of n should be greater than or equal to m1 plus m2 times of g into sine of theta. तो हमारे पास अगर हम n का वैल्यू पुट करें, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द n वैल्यू विच इज m2 टाइम्स ऑफ g इनटू cos ऑफ थीटा. दिस शैल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू m1 प्लस ऑफ m2 इनटू g टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा. तो हमारे पास जो है म्यू का वैल्यू इन द क्वेश्चन फॉर द m2 इज गिवन एज 0.3, and then we have the m1 value is given as 1 kg.
we have the m2 value given as 2 kgs, and then हमारे पास g का value we are going to take it as 10 meter per second square. Now putting these values in the equation number first, we have implies that 0.3 multiplied by 2 multiplied by g is 10 multiplied by cos of theta, this shall be greater than or equal to 1 plus of 2 multiplied by 10 multiplied by sine of theta. So which implies we'll have 6 times of cos of theta. This shall be greater than or equal to 30 times of sine of theta. So further we can write it down as हमारे पास tan of theta जो होना चाहिए that should be less than or equal to 6 by 30, or which implies tan of theta should be less than or equal to 1 by 5, and or tan of theta should be less than or equal to 0.2. And in the question we are given that theta for the 0.2 is approximately equal to 11.5 degrees. Now यहाँ पे हमारे पास दो केसेस अराइज होते हैं. अगर हमारे पास थीटा द एंगल फॉर इंक्लिनेशन इज लेस देन 11.5 डिग्रीज, देन हमारे पास जो है देयर इज स्टैटिक फ्रिक्शन इन प्लेस. देयर इज स्टैटिक फ्रिक्शन इन प्लेस एंड हमारे पास जो f का वैल्यू होगा दैट विल बी गिवन बाय m1 प्लस ऑफ m2 टाइम्स ऑफ g इंटू साइन ऑफ थीटा. एंड सेकेंडली अगर हमारे पास जो वैल्यू है वो ग्रेटर होगा एंगल का ग्रेटर देन 11.5 डिग्रीज, देन डायनामिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले. अब हमारे पास डायनामिक फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है एंड हमारे पास जो f का वैल्यू आएगा दैट विल बी म्यू टाइम्स ऑफ m2 इंटू g टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा. सो मूविंग टू द फर्स्ट स्लाइड. तो हमारे पास पहले केस के लिए फॉर द फर्स्ट केस वी हैव 5 डिग्रीज एंड वी हैव 10 डिग्रीज, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 11.5 डिग्रीज. तो इन दो के केस में हमारा जो f दिया जाएगा दैट विल बी m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ g इंटू साइन ऑफ थीटा. एंड सेकेंडली हमारे पास जो केसेस है 15 डिग्रीज के और 20 डिग्रीज के विच आर बोथ ग्रेटर देन 11.5 डिग्रीज. फॉर दिस केस f विल बी गिवन एज म्यू टाइम्स ऑफ m2 g cos of theta. अगर हम इन रिजल्ट्स को कंपेयर करें देन फॉर p एंड q वी हैव द ऑप्शन 2 एंड फॉर r and s we have the option 3. So therefore our final answer should be option D. I hope you understood it well and best of luck.